Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. In this video, we are going to learn how we can make true copy of a list in Python. To understand the meaning of true copy of a list, we suppose L1 is a list variable and it contains a list having three elements 1, 3 and 5. These three elements are of integer type. Now, here I am taking another variable L2 and I am assigning list L1 into the list variable L2 by using the assignment operator. Clear? Now L2 is point to the list L1. Both the variables N1 and L2 point to the same list by using this statement. Okay. Next, if I display L2, then it will display the same list 1, 3, 5. Now I have changed the value at index 1 of list L1. मैंने क्या किया है L1 के इंडेक्स 1 पे वैल्यू को मॉडिफाई किया है. पहले क्या वैल्यू थी 3. Now I have modified this value to 4. अब मैंने क्या किया वैल्यू को 4 कर दिया. Now display L1. Next this value is the new value. ठीक है ना, after the modification. Now list is 1, 4 and 5. If I display L2 is also have the modified value 4, 1, 4, 5. That means if we make the changes in any of the list, then the changes will also reflect in other list also. Okay, see, list L2 is also reflecting the changed value of list L1. हमने सिर्फ L1 में चेंज की वैल्यू और L2 में वो क्या होगी, चेंज होगी. L1 में तो चेंज हुई और L2 में भी चेंज होगी. That means both the list variable point to the same list. बट हम ये नहीं चाहते. हम क्या चाहते हैं कि हम एक लिस्ट में चेंज करें तो दूसरी लिस्ट में चेंजेस ना हो. ठीक है, हमें सिर्फ ट्रू कॉपी चाहिए. True copy means independent copy of the list. Both the list must be separate. ये हम एक लिस्ट में चेंजेस करते हैं तो दूसरी लिस्ट में चेंजेस नहीं होने चाहिए. See, if you want both the lists to be independent of each other, then you should create copy of list using list function. ठीक है, हमें उसके लिए क्या यूज करना होगा, list function. And you can use copy function also. तो L2 क्या है, L2 is a list variable equals to list of L1. L1 क्या है, L1 वो लिस्ट है बेटा जिसकी आपको ट्रू कॉपी बनानी है. Okay, now L1 and L2 both are the separate list. See this example, L1 क्या है, list having 3 elements 1, 3 and 5 and L2 क्या है, L2 is another list variable. Here I am using list function to make the true copy of list L1. Clear? हमें किसकी कॉपी बनानी है, ट्रू कॉपी L1 की. Now display L2 and it will display the content of list 1, 1, 3, 5. If I have changed, यहाँ पे हमने क्या किया, L1 की इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू थी 3, नाउ अब इसको मॉडिफाई करके क्या बना दिया 4. ठीक है ना, 3 वैल्यू को चेंज करके क्या असाइन किए 4. नाउ डिस्प्ले L1, देन L1 इज 1, 4, 5 आफ्टर द मॉडिफिकेशन. 3 वैल्यू किस में चेंज होगी 4. अब 1 and 5, जीरो इंडेक्स पे क्या है 1 और सेकंड इंडेक्स पे क्या है 5. फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू चेंज होके क्या हो गई 4. नाउ डिस्प्ले L2 विल रिमेन सेम. कोई L2 में चेंज नहीं हुए है ना. I have changed only list L1 and the changes will not reflect into L2. जो हमने ट्रू कॉपी बनाई तो हमने एक लिस्ट में चेंज किए बट वो चेंजेस विल नॉट रिफ्लेक्ट टू द अनदर लिस्ट. See, list L2 is not reflecting the changed value. List L2 is independent of list L1.
both the L1 and L2 point to the separate list. आप कॉपी फंक्शन यूज करेंगे तो आपके लिए क्या सिंटेक्स रहेगा, L2 इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी. ठीक है, कॉपी फंक्शन. नाउ लेट्स do this practically. Here I am taking a list L1 1, 3, 5. 3 variables हैं. Now check the ID of this list. ID क्या रिटर्न करेगी बेटा कि मैं किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है. ठीक है, it will return the memory location of the list L1. Now I am taking another list variable L2 and assigning L1. Display L2 having the same elements 1, 3, 5 as L1. Now check the ID of L2 also. ID of both the list is same. दोनों लिस्ट की ID कैसी है, सेम है. यदि मैं इसमें चेंज करती हूँ बेटा, इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू एट इंडेक्स 0, L1 की 0 इंडेक्स पे वैल्यू अभी क्या है, 1 है. नाउ I will modify it to 11. Now display L1. L1 में अब क्या वैल्यू होगी बेटा, 11, 3 and 5. 1 modify होके क्या हो गया, 11. Now display L2. L2 is also changed, है ना. I make changes only in list 1, but those changes will also reflect in L2. दोनों में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना. L1 में हमने चेंज किया, L2 में भी चेंज हुआ. बट अब हमें क्या करना है, हमें तो ट्रू कॉपी चाहिए. ट्रू कॉपी मीन्स L1 एंड L2 बोथ मस्ट बी इंडिपेंडेंट. दोनों कैसी होनी चाहिए, सेपरेट कॉपी होनी चाहिए. नाउ सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए. नाउ बाय यूजिंग द list function we can make true copy of this list L1. L1 क्या है, L1 वो लिस्ट है जिसकी हमें ट्रू कॉपी बनानी है. क्लियर. देखो अब ID ऑफ L1 चेक करें. ID क्या है L1 की, दिस वन. एंड L2 में जो कंटेंट्स हैं वो भी क्या है, 1, 3. बट ID ऑफ L2 क्या है, अब will be different. Here ID of L1 क्या है, this, and ID of L2 is this, and both ID are different. ठीक है. If we make changes in any of the list, then it will not reflect to the other list. Here मैंने क्या किया, L1 की इंडेक्स 0 पे क्या था, 1 था. Now I have changed this value to 11. Now see, L1 have changed 11, 3, 5. Now display L2. Changes will not reflect in list L2 because ID of both the lists are different and both the variables point to the separate list. अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों separate list को point कर रहे हैं. Okay. So if we make changes in any of the list, then the changes will not reflect in other list. Now I hope this topic is clear to you. If you like my video, then like, comments and share my video and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates for my upcoming videos.